What is the achievements? So Kharavela is the third of the ruler of the Mahimdharma, the third ruler. Actually, uh, 3 number dynasty of the Kalinga modern day Odisha was not only great conqueror but also a significant patron. Actually, Kharavela belongs to the Chedi dynasty and Mahimdharma Kharavela, Oiro Kharavela, conqueror. Not only great conqueror, वो सिर्फ माने से केवल राज्य को जय कर नथिले बट आल्सो एक सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स the स्थापत्य कला and religion dharma and most of our knowledge comes from Hathi Gumpha inscriptions. Actually Kharavela, actually if you know Kharavela mu janiba kale we know about the we have to see Udayagiri, Khandagiri and Hathi Gumpha inscriptions. Actually everything see art and architecture written inscribed ଲେଖା ହେଇଛି ଖୋଦନ ହେଇଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଅନ୍ ଦ ରକ୍ ଉପରେ on the cave in the cave of Kharavela जो उदयगिरी cave ता भीतर लिखा है तो की कल्चरल अचीवमेंट्स एक्चुअली मुख्य की मीन्स मुख्य कल्चरल अचीवमेंट्स कौन आर्किटेक्चरल पैटर्नेज उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स आर्किटेक्चरल पैटर्नेज एक्चुअली खारवेल पैटर्नेज माने पृष्ठपोषकता पैटर्नेज माने होची पृष्ठपोषकता उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स से खारवेल एक्चुअली खारवेल ऑर्डर देथिले माने हाउ माने एट दैट टाइम बिफोर 2000 सेंचुरी 2000 वर्ष 2 इयर्स एगो से केमती हाउ माने हु एंड हाउ किपरि एटा लेखा रिटेन्स सो बाय द पैटर्नेज ऑफ द किंग खारवेल देथिले निश्चित माने ऑर्डर किंग ऑर्डर देथिले निश्चित Kharavela most enduring legacy in the excavation of residential caves. Actually, the Udayagiri and Khandagiri caves, it is used for the monastery, the Jain monastery, Jain monks. Actually, they built for Jain monks. Kharavela and most enduring legacy is the excavation of excavate. Actually, in the cave, actually build theory करते construct theory करते पर the का Jain. Kharavela was the belongs to Jain dharma, Jainism. So residential cave of the Jain monks. Rani Gumpha, largest Gumpha hochi Rani Gumpha. Rani Gumpha the largest and most other Rani Gumpha, Ganesha Gumpha 13, 16. Largest and the most famous double story cave. Double story देखियो अपन देखी थी बे उदयगिरी खंडगिरी double story मैंने दिताला 2-stair buildings 2-story cave Udayagiri known for its elaborate bridges and sophisticated sculpture work. So many sophisticated sculpture works तात्पर्य actually so many figures statue it is built in Hathi Gumpha, Rani Gumpha. Hathi Gumpha elephant caves contain the famous inscription detailing his reign and his marvel of rock cut architectures. Hathi Gumpha this is the elephant caves. Hathi Gumpha is elephant caves contains famous inscription detailing his reign. रानी गुम्फा रे सो लिखा है अबाउट तांकर रेन तांकर काले माने तांकर समय एंड इज ए मार्बल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर रॉक को काट के माने जो पत्थर को काटी करी आर्किटेक्चर कला स्थापत्य से करथिले खारवेल प्रमोशन ऑफ जैनिज्म खारवेल वाज ए डिवोट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म इज क्रेडिटेड विथ रिकवरिंग द कलिंग जिन्न एक्चुअली खारवेल कोन करथिले रिकवर करथिले कलिंग जिन्न मूर्ति को द आइडल ऑफ द जैन तीर्थंकर that had been taken away by the Nanda Empire. Actually, Magadha Nanda Empire he taken away he capture कर नहीं थिले the Jain जो तीर्थंकर idol को and Kharavela recover करथिले and the Nanda Empire empire century earlier माने किसी वर्ष पूर्वे and he convened a great council of Jain monks at Kumari Parvati. He convened a great council of Jain monks. Council करथिले जो हमारे बौद्ध जो जैन सम्मेलन काउंसिल्स परिषद जमती आमर जो बौद्धंकर 4 4टा होता कौन 4 आमर कन्वेंशन होता काउंसिल होता फास्ट होता कौटी राजगृह रे तापर होता पाटलिपुत्र रे सेमती वैशाली रे तापर पाटलिपुत्र रे देन होता आमर काश्मीर रे होता सेमती मान कुमारी पर्वत उदयगिरी करथिले से माने उदयगिरी मीन्स आमर ए ओडिशा रे टू कंपाइल द जैन स्क्रिप्चर्स जैन स्क्रिप्चर को कंपाइल करथिले माने संकलन करथिले स्क्रिप्चर्स आर्ट एंड स्कल्पचर तो आर्ट रे व्हाट इज द एडवांटेजेस बा तांकर कंट्रीब्यूशन कोन माने दान कोन अछि द रिलीफ स्कल्पचर्स इन द केव्स ऑफ रिप्रेजेंट ए हाई पॉइंट ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड स्कल्पचर द रिलीफ sculptures in the caves represent a high point in early Indian art.
इंडियन आर्ट में जो आर्ट स्कल्पचर, आर्ट अर्थ कला, स्कल्पचर अर्थ तात्पर्य, केप रिप्रेजेंट हाई पॉइंट इन अर्ली इंडियन आर्ट। एक्चुअली एट दैट टाइम से समय व्हाट आर द माने इंडियंस वेयर ऑफ माने बेस्ट इन आर्ट एंड एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक्चुअली एवरीबडी सीन इन द वर्ल्ड, समस्त देखि परछंती। सो इफ खारबेल नॉट एस्केपेड न करता इन द केव, सो हाउ विल नो अबाउट द art and the architecture of the ancient India, ancient Odisha, we can जानते हैं। The depict a scene of the daily life, that and royal procession, माने कौन से what he written, कौन से लिखे थे, he has written royal procession, daily life, music, dance, religious symbols, providing everything, royal procession, music, dance, and religious symbols, providing a window into the social life. Actually, of the first and second century, फास्ट प्रथम और द्वितीय सेंचुरी शताब्दी समय बीसी समय व्हाट वाज द डेली लाइफ, डांस, रॉयल प्रोसेसन, माने ये किंग कर रूल कोन केंदी रूल रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन से सब रिलीजियस सिंबल्स ही डेपिक्ट करथिले, ही एस्कैपेट करथिले इन द केव रे सब करथिले। एंड वी कैन नो आमे जानि परछि से समय रे सीइंग द इमेज देखि कि हम से जानि परछि पब्लिक वेलफेयर से पब्लिक पे कोन काम करथिले खारबेल। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक वेलफेयर माने पीडब्ल्यू जो काम हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शंस। तेणु हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन मेंशन्स दैट इन इज फिफ्थ रेगनल ईयर, हाथी गुंफा केबे हितला तांगर पंचम वर्ष रे फिफ्थ रेगनल इयर्स ही रिनोवेटेड ए कैनल दैट हैड बीन बिल्ट बाय, कैनल से करथिले गोटे एक्सटेंडिंग इट टू हिज कैपिटल्स। तां कोन करथिले गोटे बीन बिल्ट बाय द नंदस 3 इयर्स प्रायर। आगे जो नंद जो कैनल करथिले ही रिनोवेटेड करथिले। एक्चुअली से माने एनी हाउ the canal may be the waste conditions, any the water is blockage, anything problems, he again renovated means he again dug it by the Nanda, which was made by the Nanda मध्ये ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। extending into the his capital कलिंग बढ़ई थिले, his capital कलिंग बंद आनथिले कलिंग नगर। नंद की थिले, नंदवाज थिले बुद्ध, नंदवाज रूलर ऑफ मगध, मगध मीन्स बिहार, से बिहार टाक एक्सटेंड करथिले कैनाल को टू कैपिटल कलिंग नगर। कलिंग नगर मीन्स कोठी जाजपुर रे अछि, अंकर खारबेलंकर कैपिटल कोठी थिबो जाजपुर। दिस शोज ए कल्चरल कमिटमेंट टू द स्टेट लेड इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क्स। तो से कल्चरल कमिटमेंट थिला तांकर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पब्लिक वर्क्स आक मध्ये दे मन ध्यान दउथिले, दे पैटर्नाइज दउथिले। पैटर्न ऑफ म्यूजिक डांस, म्यूजिक डांस रे कोन से पैटर्न दउथिले, खारबेल वाज ए लवर ऑफ द फाइन आर्ट्स, was a lover of fine arts, actually very good, very powerful and very innovative king was king, was a lover of fine arts. He organized various musical performance, dance and the festival to entertain his subjects like अशोका। अशोका जमती कौन करथिले फॉर एंटरटेनमेंट पई से बिना यज्ञ रिचुअल्स एंड वेरियस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करथिले, जो कुंभ मेला दिस टाइप्स ऑफ जो कर्ण जो हमर करथिले हर्षवर्धन, दिस टाइप्स ऑफ खारबेल festivals and to entertain the his subject। and subject means कौन है लोक मान कहंदी subjects माने प्रजा मान कहंदी tyranning, earnings him the subject, earnings him the title of गंधर्व वेद बुद्ध expert in the science of music। actually various of music festivals for the entertainment पई से arrange करथिले many performances, dances, festivals and earning him the title of गंधर्व वेद। हम कहतला गंधर्व वेद बुद्ध expert। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस माने कौन थिला, क्या था, कौन थिला। खारबेल रेन मार्क ए गोल्डन एज फॉर कलिंग, कलिंग के लिए गोल्डन एज था। हिज कल्चर अचीवमेंट थिला रिफ्लेक्ट बैलेंस रूलर हु कंबाइन मिलिटरी माइट विथ रिलीजियस टॉलरेंस। नॉट ओनली हिज माने कंकरर, ए गुड कंकरर मींस विजेता नथिले, नॉट ओनली माने एक्सपर्ट इन माने बेस्ट इन द मिलिटरी, ही आल्सो बैलेंस्ड also good achievements in religious tolerance, माने धर्म को टॉलर करथिले, माने एवरी ही टॉलरेट एवरी रिलीजन्स। इंडिया इज सेकुलर कंट्री, माने सारा बहुत धर्म को नहीं सौथिले, से डॉट इनटॉलरेट नथिले, अन्य धर्म को मध्य कोऑपरेट करथिले, टॉलरेट करथिले। एंड डीप एस्पिसिएशन ऑफ द एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअली डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल माने भौतिक, माने जो हमर धार्मिक एंड एस्थेटिक मींस कोन जो हमर वैराग्य, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स डेवलपमेंट ऑफ हिज किंगडम। ए जैन मानकर जैन मंक को से फ्लोरिश करथिले। फ्लावरिंग ऑफ द जैनिश कल्चर ताको फॉल फ्लावरिंग अर्थ होची माने प्रस्फुटित करथिले, फ्लोरिशिंग करथिले। हिज इफेक्टिवली रिवाइव्ड कलिंग ए प्रेस्टीज ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ରିଭାଇଭ୍ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନାଓ ଏ ଗୁଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଗୁଡ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ନାଓ ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ୱାର୍ଲଡରେ ସୋ ମେନି ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ ଅଡିଏନ୍ସ କମ୍ସ ଟୁ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଦେ also they also encourage କରୁଛନ୍ତି they also appreciate କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ବିକଜ କ'ଣ ଖାରବେଳ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ଓଡ଼ିଶା also ମାନେ ଫ୍ଲୋରିଶ ହେଇଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଦି ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। हमें पढ़ा द इंडियन नेशनल आर्मी एक्चुअली हमें पढ़ा व्हाट रोल डिड द आईएनए ट्रायल्स प्ले इन द फैसिलिटेटिंग इंडिपेंडेंसी व्हाट रोल डिड द आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स प्ले इन द फैसिलिटेटिंग इंडिपेंडेंसी एक्चुअली जो व्हाट इज द रोल ऑफ इंपैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी रो जो ट्रायल होता माने जो आईएनए लेड बाय सुभाष चंद्र बोस लेड द्वारा लेड करते सेटा को जो ट्रायल होता इन द रेड फोर्ट जो होता तार व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्वाधीनता माने कौन से एक्चुअली गुड इंपैक्ट थिला। Indian National Army trials also known as Red Fort trials. Actually, you know, 1946. Actually, मुख्य gist कौन the English person, British person they rule India शासन करते with the help of पूरा already cooperated with the Indian Army, Navy and Air Force. Collectively, they helped the British to rule over India. When for the Indian National Army जो trial है so Indian Navy, Air Force and the Army they already rebel कले. So actually British thought भाविले जब if Indian Army Air Force and Navy they not cooperate with us so how will rule with such a vast country केन शासन करे एतोड़ देश को तेणु जेटा इम्पैक्ट बदर पड़ला कौन है इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स also known as the Red Fort trials कहते हमें 1946 यार मैसिव टर्निंग पॉइंट और आसिला इंडियन इंडिपेंडेंस रे आसिला कोटा आसिला 45 1946 एक्चुअली where a mass actually Red Fort is a massive turning point actually a massive turning point in the Indian independence movement एक massive turning point था बहुत बड़ा turning point था actually massive means पूरा भारत का सारे मतलब सब लोग को पूरा turning point mass protest आसिला independence movement they acted as a catalyst they eventually made by British rule in the Indian unsustainable actually sustainable तो स्थिर तो British movement they acted as catalyst the British were sustainable थे माने वो स्थिर थे exist थे so help of Indian Army so first time eventually made British rule uncertain British मान को जो देखा तांका सिंहासन हलिला बुझे तो Indian unsustainable their सिंहासन their crown माने crown ता तांकर हलिला unsustainable हो गला unification of the political parties तापर भारत political parties एकाठी हो गले actually दिन भोट रे बतन देखा जो आदि टाइम अप जंती गोटे कोन इश्यू हे सब देखा देउछंती काले बतन लोक कम खरा हेबे सेंती बतन इंडियन यूनिफिकेशन हेला पॉलिटिकल पार्टी के थिले हमर हुई द मन ट्रायल होतला ए हमर कॉलोनल प्रेम सेहगल आज शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो कॉलोनल गुरुबख्श सिंह धिल्लन ये थिले सिख थिले और मेजर जनरल शाहनवाज खां ही वाज अ मुस्लिम थिले हिंदू सिख एंड मुस्लिम क्रिएटेड a rare moment of the complete national unity. Actually, India, these are national unity. Actually, 3 persons, they are Hindu, belongs to Hindu, Christian, and the Muslims. Pura Indian, तापर Hindu, Muslim, Christian, they also united हो गए. यदि leader of Hindu, Muslim, Christian ही पड़ते, ताले people are kind of united करिए. So they also be united हो गए. Rare moment of complete national unity को देखा ला भारत रे. Major political groups like the Indian National Congress, Muslim League, and the Akali Dal all came together to defend the Indian soldiers. भारतीय सोल्जर को डिफेंड करिया पई माने केस लड़िया पई दे फाइट फॉर द लेड द ट्रायल ऑफ लेड द लॉयर पैनल टाको लीड कले कि नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू एंड डिफेंड हमर हिंदू सिख क्रिश्चियन मुस्लिम्स they all are united hegel political groups like Indian National Congress Muslim League and all are united hegel massive public outpouring actually massive public outpouring पूरा public outrage दिखाला पूरा आंदोलन दिखाला movement mass movement दिखाला British expected the public to view the INA as a traitors actually British thought of traitors means कौन what कहते हैं treason जो sedition माने देशद्रोह या traitors जो देशद्रोही माने British thought expected कि people who thinks themselves as a traitor people who have उनको देशद्रोही धोखेबाज but the opposite happened in the trial spark means जो हमरो निया अग्नि उद्गीरण हुए sparking करे
नेशनल प्रोटेस्ट देखाला, मासिव प्रोटेस्ट देखाला, आंदोलन देखाला, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कले सब ब्रोक आउट अक्रॉस द सिटीज लाइक कलकत्ता। ब्रोक आउट माने स्टार्ट हैला अक्रॉस द सिटी लाइक कलकत्ता देखाला, मासिव डेमोन्स्ट्रेशन देखाला, पीपल प्रोटेस्ट कले दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता सब सिटी रे अगेंस्ट माने अगेंस्ट द ब्रिटिश बट फॉर फेवर ऑफ द दिस पर्सन धिल्लन एंड सेन देखा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पॉलिटिकली मोबिलाइज देखाला। तो कांग्रेस फॉर्म्ड एन इंडियन डिफेंस कमिटी कला, जवाहरलाल नेहरू मन सब डिफेंस कमिटी कले व्हिच इंक्लूडेड प्रोमिनेंट लीडर, जो माने प्रोमिनेंट लीडर्स सब थे, इंक्लूड प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, भालू भुल्ला भाई देसाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन गोटे भुल्ला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू ये थिले जो माने डिफेंस पैनल माने जज पैनल रो से माने लीड करथिले। एंड सो मुस्लिम लीग रो मोहम्मद अली जिन्ना ही वाज आल्सो लीड करथिले जो लॉयर्स पैनल। इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कौन इम्पैक्ट है ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस माने ब्रिटिश इंडिया माने इंडियन आर्म ता है ब्रिटिश कंट्रोल थिला। सो दिस इज दैट इज कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। दिस वाज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यार स्लो हो जाय जदी ताको स्पीड देखन जरा स्पीड होसी सेटा आपण से स्लो कर देख परिबे। दिस वाज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल द ट्रायल्स, most significant. The British realized they could not longer rely on the loyalty of Indian soldiers. Actually, British rule over India for the rely means विश्वास करिया, reliance and विश्वास, rely of Indian forces. But no longer the things that India, the loyalty of Indian soldiers already reducing, कमी जाउछि तंकर जो loyalty माने अन्य जो राजा प्रजा, that is the relation था। British realized that they could be longer rely on the loyalty of Indian soldiers, could no longer rely, बेसी दिन आउ रिलाय हे परिबो नै, विश्वास करि होबनी। सिंपैथी इन द रैंक्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स, सिंपैथी तो इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी जो नावी एयर फोर्सेस थिले बिगन टू आइडेंटिफाई विथ द आईएनए पैट्रियोटिज्म, बिगन आरंभ कले टू आइडेंटिफाई करिया पे विथ द आईएनए पैट्रियोटिज्म माने इंडियन नेशनलिस्ट को जो इंडियन नेशनल आर्मी हु लेड बाय द सुभाष चंद्र बोस, ताको से पैट्रियोटिज्म भाबिले, पैट्रियोटिक भाबिले, पैट्रियोटिक माने देश भक्त भाबिले, but devotive have rather than their oath to the crown. Actually Indian army air force semanकर oath थिला का to the crown को माने ब्रिटिश तांकर रानी की क्वीन को देयर oath थिला, जने शपथ कोन नियंती जे oath नियंती जे आमे देश पई रानी को पई मरिबो जीवन देबो, किंतु से देयर फेथ तांकर फेथफुलनेस पैट्रियोटिज्म ओबीडिएंट लिखा हला अगपति टुवर्ड्स द इंडियन जो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाय द सुभाष चंद्र बोस को जो आर्मी को देखा हला तांकर। तो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट देखा 1943 मुख्य, दिस इज द मेन कॉज, मुख्य कारण डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द इंडियन ट्रायल्स, सेलर्स एंड बॉम्बे रिवोल्ट। एक्चुअली इंडियन आर्मी जो नेवी जो बॉम्बे एरिया बॉम्बे रीजन से इंडियन नेवी ऑलरेडी रिवोल्टेड करले अगेंस्ट द ब्रिटिश, व्हिच वाज द फाइनल सिग्नल टू द ब्रिटिश, दैट ब्रिटिश का फाइनल सिग्नल थिला दैट देयर मिलिटरी नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इंडिया, इंडिया से माने एग्जिस्ट करबे नहीं, control over the Indian is collapsing, तांकर control over the Indian empire by Indian colony was collapsing कर जाउतला, reducing कर जाउतला, pressure on the British policy, तो British policy से pressure देखाला। The intensity of the protest force the British realized that the stake in India would require massive military force दरकार, माने सच्चे भास्ट कंट्री इंडिया से बहुत बड़ा कंट्री, सच्चे भास्ट कंट्री इफ वी यदि हमें रूल करिवा द रूल ओवर इंडियन सच्चे भास्ट कंट्री, so it is impossible without military, without loyal military दरकार, loyal air force दरकार, otherwise such a vast country not rule, it is impossible, so require massive military forces दरकार for that they no longer possessed after the World War II. After the World War II Indian actually the population Indian people is already against of the British India, when Indian army air force and navy they are against the British India, Britishers, so they no longer they thought they no longer exist in India, no longer exist कर परियो नहीं। Already on the arrival of the cabinet mission, then cabinet mission आसिला, arrival of the cabinet mission and the eventual decision for the transfer of power, माने actually Britishers so intelligent थे, यदि if Indian totally माने all Indian Air Force Army they will revolt कर देबे ताल then British will be kill मरी जीवे, they will be firing हे जीवे, they will shot माने गोली करी मार देबे by the Indian Army वाला मारी देबे। So before ता पूर्व why they transfer power न कर देबे with silently से कौन कर ट्रांसफर पावर कर देले by the rule Indian Independence Act तापर कैबिनेट मिशन आराम से देश छाड़ी पळेले,
अदरवाइज जदि समय अपेक्षा करते दे विल टेक टाइम नहीं था दे इंडियन आर्मी एयरफोर्स दे किल देम मार दी था दिस इज आल्सो गुड पॉलिसी माने डिप्लोमेटिक पॉलिसी भल थिला discussion of the main principle of the alekha महिमा धर्म discussion main principle कौन महिमा धर्म already माने महिमा गोसाई led by the महिमा गोसाई founder by महिमा गोसाई is a unique monotheistic religious monotheistic actually one god India Odisha India Hindu धर्म 33 crore gods exist कर देवता who obey जगन्नाथ जी लिंगराज शिव सत्य so many but monotheistic माने one god religious movement धार्मिक movement सब ओडिशा that emerged in the 19th century means 1800 to 1900 भितर 1918 से 1900 भितर as a protest against ritualistic practice actually in India but ritualistic practice actually हमर सब थिला माने यज्ञ रिचुअल्स इस धर्म व्हाई कम्स टू इंडिया कहीं इंडिया को आसिला बर्तन बिकज माने इन हिंदू धर्म कि अलग से धर्म रे सो मेनी जो सैक्रिफाइस बलि ऑफर्स दान दक्षिणा सब एक्चुअली एंड जो कम्युनल नॉट कम्युनल से कम्युनलिज्म नथिला माने हमर जो कम्युनलिज्म लड़ाई भाइलेंस नथिला सेतला हमर इथिला कोन कास्टिज्म थिला डिस्क्रिमिनेशन थिला अनटचेबल अच्छा अच्छा ऐसे जिंस जो एमानकर बर्तमान नो रिलीजन आगर किसी रिलीजन किसी यूनिक पूरा समस्त सम्मान ऑल आर इक्वालिटी से सब जिन आरंभ माने हला भक्ति धर्म जो सांस्कृतिक भाषा भी सब धर्मटा वेद उपनिषद देर टिपिकल थिला कॉम्प्लेक्स थिला बट ये इजी सब थिला से विभिन्न सब धर्म नानक चैतन्य सो मेनी ये महिमा गोसाई भीम भई सब मेनी हमर जो अतिव दासकर भागवत ऐसे सिंपली सब लिखा हला तो 19th century सब आज प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट माने अगेंस्ट रिचुअलिस्ट प्रैक्टिस हमर जो रिचुअलिस्ट अगेंस्ट विरुद्ध रे जाउतला हमर जो यज्ञ यज्ञ रिचुअल्स ऑफर टेंपल्स प्रेयर ये सब जिंस आइडोलेटरी मूर्ति पूजा एंड द कास्ट सिस्टम जो जाति प्रथा ए मंदिर रे ए कास्ट एंट्री कर परिवे एग्जिट कर परिवे दैट इज द सो मेनी सब हमर रहितला कोन त कोंती सब इग्नोरेंस रहितला अंधविश्वास रहितला तेणु कोर प्रिंसिपल ऑफ महिमा धर्म प्रिंसिपल कौन सा महिमा धर्म कोर मुख्य कौन थिला मोनोथिज्म वन गॉड अलेख ब्रह्म ब्रह्म मीन्स जो आत्मा वन आत्मा द प्राइमरी बिलीफ इज द वन सुप्रीम फॉर्मलेस गॉड कॉल्ड अलेख ब्रह्म अलेख एक्चुअली वन सुप्रीम फॉर्मलेस गॉड कॉल्ड अलेख बा ब्रह्म वन गॉड इनडेस्क्राइबेबल माने वर्णना करियबनी इट इज माने कहते अनलिमिटेड अनंत असीम एंड महिमा गोसाई फॉलोअर्स believe God cannot be depended by the idols images actually followers believe करथिले God cannot be depended by the idols actually God is unlimited everywhere is God अछि तो how ए idol गोटे मूर्ति किपरि डिपेंड करियो by the idols or image God केमती माने God तो अनंत everywhere find so how he exists एबे गोटे idol भीतर इन images केमती डिपेंड करिवे बोलो तो सब जगह रे अछि so that is rejection of the idolatry को रिजेक्शन कर देले मूर्ति पूजा इमेज and महिमा धर्म strictly forbids the worship actually से तो कास्टिज्म थिला तो लोअर कास्ट पीपल नॉट एंट्री इनटू द टेंपल्स तेनु तांका मध्ये बहुत माने देयर डिफरेंशिएशन थिला से भेद विभेद तो दे लाइक कले सब आधार कोनोसी मंदिर कोनोसी छुआ अछट अनटचेबिलिटी नथिंग पूरा सिंपल ओपननेस एवरीबॉडी तो महिमा धर्म स्ट्रिक्टली forbids the worship of idols already forbid पूरा स्ट्रिक्टली forbid मना पूरा मना पूरा stones or any physical representation of the divine stones or tree everything any physical representation माने कौन सी रिप्रेजेंटेशन माने कोन हमर माने जनक पई आउ जने भगवान को पई गोटे पत्थर सेंती जिंस सब कपड़ा कन्ना सिंदूर एवरीथिंग सी दे रिजेक्ट कर देले एवरीथिंग सी एनी साइन को से ओनली माने से कहथले माने महिमा दे बिलीव करथले गॉड इज एवरीवेयर इज नॉट एनी फिक्स इमेज फिक्स तंगर से इमेज किछि नै अपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम से अपोजिशन करथले विरोध करथले अगेंस्ट सेंटर पिलर ऑफ द फेथ थिला इन बिलीफ इन द ह्यूमन इक्वालिटी तंगर थिला सेंटर पिलर तंगर थिला फेथ विश्वास थिला मनुष्य सम्मान इट रिजेक्ट द ट्रेडिशनल वर्ण कास्ट सिस्टम वर्ण जाति वर्ण कास्ट जो हमर वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मणिज्म ब्राह्मणवाद को मुख्यतः दे विरोध करथले actually it rejects the traditional varna caste system reject करथले traditional varna system teaching the that all humans are equal in the eyes of the सब ह्यूमन को से माने are equal in the eyes of the अलेख ब्रह्म को eyes रे all human are equals no casteism no person is high
elite dhani goshti nothing, all are same. Sun worship niti, while they don't worship the sun as a god, while they don't, the followers perform prayers at sunrise, surya sakale or sunset re. After the sunset they never take any food. Before the sunset purpuru sana khadya khaibeni. Before the sunrise purpuru perform prayers at sunrise, worship the sun as a god. Don't worship the sun as a god. କିନ୍ତୁ they face the sun during these times. They face the sun during these times as is considered the most powerful. Actually, they don't worship sun as a god. Sun गोटे भगवान भलिया, because but they believe sun is powerful energy. Sun gives energy दोचे. Face the sun during these times as is considered the most powerful manifestation of the formless divine energy. Actually, से कहते sun is formless divine energy, गोटे दैवीय शक्ति, गोटे spiritual power गोटे सन टा. एसेटिज्म मान द सिंप्लिसिटी, जो वैराग्य सन्यास्य. एसेटिज्म माने वैराग्य, सिंप्लिसिटी माने साधारणता. रिलीजन एम्फासाइजेस सिंपल और austere लाइफस्टाइल. एक्चुअली लाइफस्टाइल ता थिला एंड द हायर ऑर्डर ऑफ मॉन्क सन्यासी, हायर ऑर्डर ऑफ मॉन्क सन्यासी थिला आर एक्सपेक्टेड टू द लीड ए लाइफ ऑफ वंडरिंग. ऑस्ट्रेलिया को वंडरिंग में से बुलुथिले पे सबडे. रिलीजन एम्फासाइजेस सिंपल ऑस्ट्रेलिया लाइफस्टाइल. हायर ऑर्डर ऑफ द मॉन्क सन्यासी तक जो माने बहुत बड़ सन्यासी जो माने सीनियर दे आर सन्यासी तक कहती. प्रथम ब्रह्मचारी एक्सपेक्टेड टू लीड ए लाइफ ऑफ वंडरिंग, नॉट स्टेइंग द सेम विलेज, नॉट स्टेइंग इन वन. रहिबो इफ यू स्टे गोटे जगह रहिले यू हैव टू माने खाद्य संचय करी स्टोर फूड वेल्थ एवरीथिंग. से वंडरिंग सब बुलुथिले सन्यासी माने बुलिबे, नॉट स्टे एनीवेयर, नॉट स्टेबल, दे आर अनस्टेबल. Wandering, not staying the same village for the more than one night. Gote night ro adhika rohuthile and accepting only cooked food from household. Khali cooked food, not raw food. कंचा माल नौथले स्टोर करूथले लोभ आसीबा. Actually the policy of the religion already different, पूरा different थिला. माने actually the लोभ greed ये सब not born, जन्म हबनी. cook food रांधिबो खाद्य कम करिवो, आ किछि जिंस जति खाइ जति नबो, you will receive how much as much as possible. You could necessary you could accept, I mean, you will accept it. Otherwise how much food you will not accept, because जति किंतु चावल गहम डाली सोना रुपा that you will accept more अधिक नै जिवो. Strictly dietary laws थिले तंगर. Followers must finish their evening meal before sunset. पूर्व खाद्य शेष करते तंगर meal. The dinner करथिले before sunset. They are also prohibited from consuming intoxicating मद substance or meaty intoxicating जुआ, injurious to health मद, liquor, गंजा, tobacco not consuming, prohibited from consuming. Universal brotherhood तंगर थिला, पूरा भातृत्व थिला, वैश्य भातृत्व brotherhood. The movement promotes peace, non-violence and a sense of community among all practitioners. Universal brotherhood actually the movement promotes peace, shanti, non-violence, ahimsa and the sense of community. माने जो जाति हमर among all practitioners, community पर सब पूरा practitioner भीतर गोटे common unity थिला, regardless of their social background. The social background anyhow, any things, any caste, but they were united थिले one community. तक महिमा गोसा, महिमा community. Other there is no any Brahmin, Vaishya, Sudra, nothing. It is a wonderful thila, it is the best thila, unity and brotherhood thila तंकर. Significance in Odisha. Mahimdharma signed a significant popularity among the marginalized. Marginalized माने होची माने तळ गोष्टी, vulnerable society, आदिवासी tribals, vulnerable people. ताको म्हणती marginalized. तळ स्तर, backward sections of the society that popular thila in Odisha because it is offer a spiritual path free from the dominance. Spiritual path free. पूरा spiritual path free thila from the dominance. Today बड़ बाबा nothing, everywhere same, everywhere get all religious persons they get equal opportunity सुजोग पाउथले, equal status पाउथले, respect पाउथले. not high low किछि नथिला. there is no upper or lower, बड़ बाबा बड़ senior, higher or lower नथिला. dominance of priestly classes and priestly थिला, priest classes, पंडित पुरोहित गोष्ठी. पूरा spiritual path free, पूरा तांका पाकु जे से धर्म देवे सेम nothing, only महिमा गोसाई. all are and expensive rituals, किसी expensive rituals यज्ञ offer that was not, सेरा किसी नथिला. The poet Bhimabhai is perhaps the most famous proponent थिले. Bhimabhai माने he popularized करथिले महिमा गोसाई को, महिमा religion को with their singing style, तांका song रे, singing रे, whose devotion hymns तांका mantra bhajan continue to spread the principle today. Also Bhimabhai
song bhajan that also popular among all Odisha, all